are going to start with chapter number 7, India, Climate and Season. In this chapter, we will study the meaning of weather and climate. Weather क्या होता है आपका डे टू डे चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वेदर होता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. क्लाइमेट क्या होता है, जो 6 मंथ या 1 ईयर लॉन्ग टाइम पे होता है, वो क्या होता है आपका क्लाइमेट होता है. ये लॉन्गर चेंज होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज. ठीक है, हम इसमें कुछ सीजन्स पढ़ेंगे. नाउ मीनिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर of place tells us about atmospheric condition of a particular day or few day. ये particular day का atmospheric condition बताती है और कुछ 1-2 दिन के बाद. ठीक है. Climate, the climate of a place refers to a regular pattern of weather condition for a long period of time. The climate of place defines the lifestyle of the people living there. Food, clothing, housing, crops, all directly or indirectly dependent upon climate of that place to a large extent. The climate largely remains the same for a few months in a year and then it changes to the next few months. Seasons are found by months with similar climatic condition. देखो अलग अलग जगह का जो क्लाइमेट है वो उसके सीजन्स पे, वहाँ के लोगों के फूड पे, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे डिपेंड होता है. Now factors affecting the climate. Climate of a particular place is affected by the physical features, temperature or amount of रेनफॉल. वहाँ का फिजिकल फीचर्स कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और रेनफॉल का अमाउंट कैसा है. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ ह्यूज लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस फिजिकल रीजन. देयर इज वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. वेरिएशन क्यों है क्लाइमेट में? क्योंकि यहाँ के जो हमारी जो इंडिया है वो साइज में बहुत बड़ा है और अगर हम बात करें जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉट और how cold a place is. There is a difference in temperature and rainfall in various parts of country. Some regions become too hot during summer and too cold during winter, while other have moderate. देखो किसी किसी जगह पे तो आपको क्लाइमेट मॉडरेट मिलेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है. All the parts of Indian subcontinent do not receive rainfall during monsoon season. ऐसा नहीं है कि मानसून सीजन में हर एक पार्ट को बारिश रेनफॉल मिलेगी. ठीक है, बहुत जगह कभी कभी होती भी नहीं है. वेरिएशन इन रेनफॉल, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन्स रिजल्ट्स इनटू 3 मेन सीजन्स इन इंडिया. दे आर समर सीजन, रेनी सीजन, मॉनसून सीजन और विंटर सीजन. ठीक है, किसके बेसिस पे? डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन्स के बेसिस पे सीजन इसको हमने डिवाइड करा है. समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड मॉनसून सीजन. Seasons in India, summer season. The summer season begins in March and it lasts till June. It is dry and hot in almost all part of India, except mountain region. Days are longer than night. Hot and dry wind called Lu blow in the northern plains region. Dust storms are also frequently during this season. The coastal plain, however, do not become very hot due to its effect of the cool sea breeze, but they have the lot of humidity. लेकिन जो यहाँ पे humidity होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, मार्च में स्टार्ट होता है, जून तक चलता है और यहाँ पे लू चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई विंड. रेनी सीजन और मॉनसून सीजन. फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स मॉइस्चर laden winds from the Arabian Sea and Bay of Bengal starts moving towards land. They are known as monsoon wind. They bring rainfall in many parts of India. ये रेनफॉल लेके आते हैं बहुत से पार्ट्स ऑफ इंडिया. The rainy season begins in June in southern India and in July in northern India. The season lasts till September. कब से लास्ट करता है? सितंबर में. The Thar Desert in Rajasthan, the Rana of Kutch receive very less rainfall during the season. Coromandel Coast receive rainfall during the month of November and December. अगर हम Coromandel Coast की बात करें, ये rainfall receive करता है in the month of November and December. Winter season, weather starts becoming pleasant from October onwards. The days starts becoming shorter and nights are longer. The sun is not very hot and this marks the beginning of winter season. डेज बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, नाइट लॉन्ग हो जाती है. ठीक है, और सन भी थोड़े कम हीट देता है. इससे ये पता चलता है कि किसकी बिगनिंग हो रही है, आपकी विंटर सीजन. द कोल्ड विंड्स दैट मेक द क्लाइमेट कूल बट इंडिया डज नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन. दिस सीजन्स लास्ट टिल February और March. January is the coldest month of this season. There is snowfall in the mountains and the areas become very cool. माउंटेन्स में आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है. Sometimes erratic rainfall makes the life of people miserable and causes damage to the crop. There is cold in northern plains and cold declines as we move towards south. The coastal plains experience
प्लीजेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, वहां का क्लाइमेट क्या होता है? प्लीजेंट होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करेंगे। इवैल्यूएशन टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज वेदर? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब हमें कोई पर्टिकुलर डे और फ्यू डेज की जब हम एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं, वो क्या होती है? आपकी वेदर होती है। क्लाइमेट क्या होता है? जब आप फॉर अ पर्टिकुलर सीजन की बात करते हैं तो उसमें हम क्लाइमेट की बात करेंगे। हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इफेक्ट द पीपल लिविंग देयर? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल, ठीक है, वो क्या बताता है? वो इफेक्ट करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच affect climate? What are the main season experienced in India? कौन कौन से? समर हो गया, मानसून जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, और विंटर सीजन। Pick the correct option. Dash is measure of how hot and how cold places is. ठीक है, क्या होता है? क्लाइमेट होता है। डैश इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और हाउ कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, किससे मेजर करते हैं हम? टेम्परेचर। डैश आर फाउंड बाय मंथ्स विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, क्या? डैश आर फाउंड बाय मंथ्स विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। सीजन, द डैश सीजन इन इंडिया बिगिंस इन मार्च। कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। द कोस्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। कौन सा कोस्ट है आपका जो रिसीव करता है? दैट इज कॉरमेंडल कोस्ट। Dash is the coldest month of the winter season in India. January. Now, fill in the blanks. Climate of a particular place is affected by its physical features and amount of rainfall. Physical features, temperature, and amount of rainfall. ठीक है? There is variation in the climate and seasons of India due to its large size and differential physical characteristics. The dash largely remains the same for a few months in a year, and then it changes for a next few months. So the climate. All the parts of Indian subcontinent do not receive rainfall during the dash season. कौन से सीजन में नहीं करता? Monsoon season. Hot and dry winds called loo blow in the northern plains season during the summer season. Okay, क्या hot और dry wind कैसे कहते हैं? लू को कहते हैं। True, false? There is a difference in temperature and rainfall in various parts of country. It's true. देखो, अलग अलग जगह पे अगर हम हिली रीजन्स की बात करें, वहां पे टेम्परेचर अलग होता है और प्लेन्स में अलग होता है। वेरिएशन इन रेनफॉल, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन्स रिजल्ट्स इनटू 3 मेन सीजन। ट्रू। द रेनी सीजन बिगिंस इन जून इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इन जुलाई इन सदर्न इंडिया। रेनी सीजन कब शुरू होता है? जून में। The cold winds that makes the climate cool, but the India does not experience extremely cold condition as we see in European countries. It's true. The coastal plains experience extreme climate during winter season. False. Extreme नहीं होता, moderate ही होता है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.